Kriya Foundation and Child Rehab Center. As you know, we are in the series of Empower, that is to empower parent and to help, right? So, I will just talk slightly about SNEAK. So, SNEAK Rehab Foundation, I'll introduce myself. I'm Harshali Kharche. I'm the founder and the mother of SNEAK Rehab Foundation. I'm blessed with two children who are on spectrum first, and then I've thought of helping parents. And so that's why I'm here with SNEAK Rehab Foundation. Basically, I'm here to empower parents, that ensuring that they should get the right direction and they should connect to the right professionals. So another of my mission is to sensitize and educate the society about our challenges that we are facing, problems we are facing day to day life and everything. For that, we are running various programs like some awareness program, parent empowering program, some financial advisory program, lots of community support we are providing. So, in these areas we are working. So I want to say that whatever I am gone through, I don't want that our future generation should face those problems. So I'm trying my best to educate the parent and develop their perspective towards the right kind of interventions and treatments, because there are many fake practices are going on in the our society, and everybody is making a business out of autism. So that's why I'm here to make aware of these things again. So I will not take much of a time, and we should move ahead with today's series. Like Empower series is to empower parents. Today in autism treatment, we are here for the open query solving sessions. That we have asked parents to put their queries in our Google form. So we have got many questions with us. But for that, to answer those questions, we have our Dr. Sumit Shinde sir with us. He is the pediatric occupational therapist and rehabilitation consultant. He has more than 18 years of experience in pediatric rehabilitation sector. He has treated or seen more than 10,000 children in CRC. So he has got various two awards I want to name it, because that is Indian Icon Award year 2019 and Youngest OT Achiever Award 2020, and many more are there. So main thing what I get connected to CRC is he has been working with an intention of integrating our children in the mainstream society. So that's our everybody's dream, right? As a parent. So I would like to invite Dr. Sir for today's question and answer session. Welcome, sir. Good evening, Harshali. Good evening, everyone. I Good hope evening, everybody sir. enjoyed Diwali. And so, yeah, am I audible properly? Yes. Yes, sir. You are audible. How can we start directly with some questions today? Yeah. Just to have a recap, we started Empower series with Harshali's, and Snake. We have asked us to many parents have some queries and many parents have some kind of a there are directions, one directions. So I'm very happy to come here. Mm, Before we started this Empower series with communication, I think communication series we did. Yes, last Yes. before Diwali, and before that we discussed a very important aspect of autism treatment, that is what are the different types of treatment are available or people follow, and that was very important. That is something trainable approach or developmental approach, and you know so these are the approaches we discussed. Um, so now today we are doing a query handling session. I think whenever some query comes to me or some parent asks me a query on a social platform,
So I would not like to be pinpointed. I would like to be more, let's go in depth. Let's go around and surround of that query. How this problem happens, or what are the different aspects of this problem. So I may take a while if any query comes to me, Harshali, so that not just one parent but many of us, or many parents do have the same kind of a query or same kind of approach related questions, or same kind of a behavior related questions, so that everybody will definitely get an appropriate way to handle it. We can start now. Yes, sir. I can understand, because we cannot be a child specific in these questions. So everybody will get benefited out of it. Our first question is from Hyderabad. It's a 7-year-old child who has autism. Can a non-verbal 7-year-old child get speech? Okay. Mhm. So what? Okay, can you repeat the question? Uh, Child is from Hyderabad. Yes, child is from Hyderabad. He's a 7-year-old. Can okay, non-verbal 7-year-old child get a speech? Okay. Um, so somewhere, what exactly the parent wants to say, I would like to reframe it for the parent. Child is 7 years, non-verbal, okay, and many parents use speech for communication. Okay, like, can my child communicate, or when my child will communicate, or maybe very specifically when my child will communicate verbally. मेरा बच्चा verbally कभी बात करेगा, you know? So यहाँ पर चाइल्ड 7 साल का है। इसके पहले हम लोग जाएंगे कि बच्चा बात नहीं कर रहा है तो उसके पीछे व्हाट कैन बी द डिसफंक्शंस एंड व्हाट कैन बी द डिलेड फंक्शंस, इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। Coming to the point, delayed functions, that is delayed development. So in my communication series, I discussed about how communication develops. जब एक 2.5 साल में हमें 2.5 साल 3 साल में जनरली हमें पता चलता है कि चाइल्ड इज हैविंग ऑटिज्म, एंड देन वी स्टार्ट विद द थेरेपिस्ट. Yes, do you agree with me? हमें, yes, what generally in general 2 years, 2.5 years. Nowadays we are detecting very early and we are integrating the child very early before the school. But एक 2.5 साल में हमें समझ में आता है कि बच्चे में ऑटिज्म है. When the child is not speaking, child is not giving eye contact, not giving a response to him. In that context, हमें सबसे पहले ये दिखता है कि the child is not talking, child is not speaking, he is not saying mama, he is not saying papa, and then some buzzer कोई तो तो बजाता है और हमें समझ में आता है कि ऑटिज्म, और हमें सबसे पहले हमारा पहलू होता है कि चाइल्ड ने बोलना चाहिए, है ना? And this is, I'm seeing this since last 20 years, and before that also the approach is like child should develop eye contact, okay, name response, and then child should speak. स्पीच आ गया, उसके बाद थोड़े वर्ड्स बोलने लगा तो लैंग्वेज आना चाहिए, लैंग्वेज आ गया, ओके, तो बच्चे ने ऑटोमेटिकली उसका कम्युनिकेशन डेवलप होना चाहिए, कम्युनिकेशन डेवलप हो गया तो फिर वो सोशल इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली कर देगा. Now this is something, our layman plan in the community of the parents, layman plan in the most of the professionals also. But actually अगर हम लोग देखने जाए तो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट या स्पीच डेवलपमेंट का जो एक्चुअल नॉर्मल ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंटल जो 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 नेचर ने दिया है, तो एक स्मॉल बेबी में अगर आप देखोगे, जो अगर शुरू होता है 0 से 2.5 साल तक, तो पहले 6 से 8 महीने में बच्चा एक्चुअली सोशल इंटरेक्शन डेवलप करता है. उसके बाद 4 महीने से लेके 12 महीने तक बच्चा कम्युनिकेशन डेवलप करता है, बहुत सारे रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन. जरूरी नहीं है कि वो वर्ड्स बोल रहा है, लेकिन वो कुछ आवाजें कर रहा है, बहुत सारी आवाजों को समझ रहा है, मम्मी को समझ रहा है, पापा को समझ रहा है, मम्मी के पास जा रहा है, पापा के पास जा रहा है, दादा के पास जा रहा है, नाना जी के पास नहीं जा रहा है क्योंकि वो नाना जी को नहीं पहचानता है. Okay, so somewhere social interaction develops first, then comes communication, then the child develops receptive language. Like, बच्चे को अगर आपने 10 महीने 12 महीने के बच्चे को पूछा that where is फैन कहाँ पर, तो चाइल्ड विल लुक एट अ फैन. दैट मींस चाइल्ड को वो फैन पता है,
ओके, तो वो बोल नहीं रहा है लेकिन उसको फैन पता है, तो he looks at a fan, like he looks at mother, he looks at various objects which are near and dear to the child. That means receptive language, and then comes the expressive language. I start saying boo boo, or I remember my many kids rather than saying rice, they say ish. I want it. इश, तो भूख लगी तो बोलते हैं इश, दैट मीन्स कुकर की सीटी बजती है तो खाना आता है, तो वो कुकर की सीटी की आवाज को वो एक्सप्रेस करते हैं, तो दे विल नॉट से राइस, they will say ish. Likewise, they develop some kind of expressive language in their terminology, and उसके बाद आता है speech. Maybe let us say 12 months onwards to 18 months के बीच में या 24 months के बीच में ये speech का एक दायरा होता है. Coming to the point of a question कि अगर हमने इस ऑटोजेनिक डेवलपमेंटल पैटर्न को अगर नहीं फॉलो किया, तो और बच्चे का रिसेप्टिव कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ है, इंटरेक्शन एडिक्वेटली डेवलप नहीं हुआ है, expressive communication develop नहीं हुआ है, and then if we move towards the speech, then we are playing with the nature, then we are playing with the nature's law. Okay, because speech is the highest term, in terms of development. डेवलपमेंट के पिरामिड में अगर यहाँ पर स्पीच है, तो सबसे पहले आता है social interaction, communication, where child is getting the thoughts, child is expressing his thoughts verbally, non-verbally, gestures पे, understanding others gestures, understanding others expressions, ये सारी चीजें मैटर करती हैं. ओके, and then अगर ये चीजों में अगर बेस तक डेवलप नहीं हुआ है, then definitely speech डेवलप होने में प्रॉब्लम हो सकता है. Now that is reason of development. Second reason is dysfunction. There are many things behind speech development in terms of sensory motor development में child is not speaking from mouth or from vocal cord. Okay, child is speaking, okay, from here a kind of a message is coming, okay, to the cognitive area is giving a kind of a message to the vocal cords, see exactly how I can make the sounds. So most of the time अगर बच्चे के माउथ, okay, there are n number of, कोई भी मोटर प्लानिंग अगर, so speech is all about motor planning, कोई भी मोटर प्लानिंग अगर डेवलप करनी है तो brain should get tactile and proprioceptive feedback. Okay, so touch, so I am understanding the touch, I am understanding my tongue movement, I am understanding my tongue placement, I am understanding my cheeks movement, I am understanding my lips movement, and that is getting registered in the brain's movement area, and that movement area is getting integrated with my thought process area or higher function area. Okay, I am trying to make it more simple. Okay, if the child's brain is not registering the touch sensation, or it can be a movement sensation in the brain, then the term called dyspraxia or apraxia will happen. Okay, so the child is understanding everything, child is interacting with other kids, social interaction develop हुआ है, communication develop हुआ है, language also he knows. अगर उसको पूछा गया कि फिश कहाँ पर है, तो वो बोलेगा फिश यहाँ पर है, मम्मी कहाँ पर, मम्मी वहां पर है, पानी कहाँ पर है, पानी यहाँ पर. So he knows all the words, but he will not be able to speak because of the term called dyspraxia or apraxia. So in that, again it is a sensory motor functioning, again it is a sensory integration dysfunction, where oral motor or oral placement or any number of things will work to create appropriate praxis, oral praxis registration in the brain, ताकि एक मोटर प्लानिंग डेवलप हो जाए. बिकॉज जब भी हम लोग बात करते हैं तो देवनागरी में आई कैन एक्सप्लेन मोर बेटर. So k, kh, g, gh, it is an epiglottic sound where I am understanding my tongue shaft, okay, is connecting to the epiglottis, and I am making the air pressure and I am making the sound. क, ख, ग, घ, जैसे जैसे tongue पीछे पीछे जाता है, I am trying to make more pressure. The sound is changing. K, ch, g, gh. Okay, it's like ch, ch, j, j. The tongue is touching the upper palate, front palate, and I'm making a pressure, air pressure. Ch, h, j, j. Okay, same like t, th, d, dh, n, sa, th. Tongue is coming from up and slapping it down. T, th, d, th, n. Okay,
Pop, pop, bum, bum, bum is like all lip sounds, like your or lower shoulder. ये सारे high resonance sounds. So these are all sounds. Okay, I am understanding in my brain first. Why? Because I am repeating these movements and I am understanding these movements again and again. स्पीच डेवलप होने से पहले ये मूवमेंट्स बहुत बार रिपीट किया जाता है ब्रेन में, ताकि ताकि ये सारे जो अ, जो जो एक ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट पैटर्न है, ओके, और वो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सर्वाइवल नीड्स है, यू नो, और ओरिएंटेशन है, उसको बच्चा बार बार देख रहा है, बच्चा बार बार सुन रहा है, और बच्चा अपने ओरल जो ब्लैबरिंग जिसको कहेंगे उससे वो चीजें बार बार रिपीट कर रहा है, एंड दैट इज हाउ द स्पीच डेवलप्स। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बच्चे ब्लैबरिंग तक रुक जाते हैं, कुछ बच्चे वर्ड्स तक रुक जाते हैं, है नो, लेकिन कम्युनिकेशन डेवलप नहीं करते हैं। दैट मीन्स डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम है। शायद पेरेंट्स और थेरेपिस्ट हैव नॉट क्रिएटेड एडिक्वेट सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज बेस। ओके, और अगर बच्चा सब कुछ समझ रहा है लेकिन वो स्पीच नहीं, उसका सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, सिर्फ वर्ड्स नहीं अटर कर रहा है, then it is a kind of a speech dyspraxia or apraxia. Then it is more of a dysfunction model where we have to work more. Okay, we need a proper assessment. If proper assessment is done, in my career, I have seen the child started speaking at the age of 14 years also. Okay, so uh, coming one more thing कि बच्चा 7 साल में बात करे, 14 साल में बात करे, शायद 20 साल में बात करे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ऑटिज्म में ये है कि बच्चा कितना एफिशिएंटली सोशल इंटरेक्ट करे, कितना एफिशिएंटली लोगों के थॉट्स को समझे, लोगों के बातों को समझे, अपने थॉट्स अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस कर पाए। क्योंकि आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी इज गोइंग सो फार अहेड दैट यू माइट नॉट हैव टू स्पीक बट यू कैन स्टिल कम्युनिकेट विद अदर्स। ओके, so rather than pushing the child, rather than making the child, bombarding the child, if he is not ready, अगर बच्चा रेडी नहीं है और अगर हम लोग बॉम्बार्ड कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ नहीं जा रहे हैं, देन स्पीच आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, शायद आएगा भी, लेकिन बिहेवियर्स जरूर आएंगे। एंड सबसे बड़ा बिहेवियर ये आएगा, द चाइल्ड विल स्टार्ट डॉजिंग द पेरेंट्स, चाइल्ड पेरेंट्स से दूर होता जाएगा। और उसमें आई हैव सीन mild autism is getting more severe because autism is not a speech disorder. Autism is a social interaction, social communication disorder. तो कोई भी चीज अगर डेवलप करना है, not at the cost of base symptoms. Okay, every time speech will definitely come if you have a wonderful communication, you have a wonderful interaction. It will come one day. Okay, understand what are the neuropsychophysiology behind it. Okay, but do not try to bombard it. Just there are few people, अगर अभी मैंने बोला तो few people will go on Google and try to search it and then okay, speech dyspraxia, apraxia, and then they will start working on it. Don't do it. It's not that simple. I mean, I'm still learning after 18 years or so. I'm not a speech therapist. I'm an occupational therapist. But I know what it is. I mean, how it is. There are many speech therapist friends are there. But because of this, because of lots of trial and error, sometimes what happens, we don't get the right kind of a data from the child because parents have tried and tested many different activities and many different things with the child. So speech is possible in every autism child, especially mild to moderate. Yes, if it is severe and severe apraxia is there, then child will not speak, but still our maximum outcome should be communication. The child is understanding thoughts, ideas, beliefs of society. Child is able to express his thoughts, ideas, beliefs to the society, not necessarily verbally, non-verbally also, so that he can become an integral part of the society. So I think this is right. So this is it. अगर 7 साल yes speech आ सकता है, no doubt नहीं आएगा, but do a proper assessment with the child. Thank you. Thank you. I think कि answer मिल गया होगा. Even we have one question in the chat box, so it's on similar lines. So I'll move ahead with the next question. Child is 11 years old and he is having ASD, ID, ADHD.
and they're from Kolkata. Since the question is, I mean, they have explained this situation that since the age of 3 years after diagnosis, baby was under guidance of OT, sensory, BM, special education, speech therapists, professionals. Till now, she is non-verbal. Though she wished to deliver word by prompting, by opening lips, but she can't utter. Eye contact, sitting habits improved. Can follow instructions 60%, but now and then gets unbearable, hyper, especially when see others to eat crunchy food. Supported by self bite, hand and leg flapping, and even throwing objects. Need your expertise to improve this activity. Is there any chance to speech? Please guide. Okay. So so 11 years child, and what I understood, let me express it again, and you can correct me because so that because it is a big question. 11 साल का है बच्चा, ASD है, ID है, and ADHD है. um, या एंड कुछ इम्प्रूवमेंट्स है उसमें, लाइक आई कांटेक्ट है, सिटिंग हैबिट्स इम्प्रूव है, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है बच्चा. आई थिंक बॉय गर्ल, आई डोंट नो. नाउ चाइल्ड इज 11 years. हाँ, एंड yes, yeah, and now can you please tell me what are the behaviors the child is facing? Uh, Prompting openly but can't talk and can follow instruction but now and then gets unbearable hyper, especially when see others to eat crunchy food. And then self biting, hand and leg flapping, and even throwing objects. Okay. Yes. So सवाल काफी बड़ा था, but it's very simple to understand behavior most of the time. uh, uh, when parent comes to us, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं, एक ही साथ बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें एज अ प्रोफेशनल हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं कहां से शुरू करूं. तो मेजरली व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज चाइल्ड is now 11 years and showing certain behaviors to hear some sounds. कुछ sounds को अगर वो सुनती है या सुनता है तो वो कुछ behaviors create करती है, like self biting कर रही है या irritability कर रही है. This kind of a behavior, in my experience, I've seen most of the time kids who are having modulation dysfunction. Okay. हमारे सेंसरी सिस्टम हमें दो दो तरीकों से मदद करती है. सबसे पहला है गिविंग इंफॉर्मेशन, लाइक आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, आई एम टचिंग, आई एम फीलिंग somebody is touching me, I'm feeling AC is coming on my face, so it is giving me a kind of a cold environmental understanding by touch. Okay, I'm moving my hands, I'm understanding my body. तो ये सारे सेंसरी सिस्टम का एक पहलू है, वन वे ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन. दूसरा फंक्शन है सेंसरी सिस्टम. यही सारे सेंसरी सिस्टम्स हमारे मूड के ऊपर भी काम करती हैं. यू नो, जैसे रात को अगर लाइट कम होती है तो हम लोग लो डाउन हो जाते हैं. नेचुरली हमारा जो एबिलिटी है, जो हमारा अराउजल है, मैं अराउजल वर्ड यूज करूंगा विच इज अ वेरी वैलिड वर्ड इन द सेंसरी इंटीग्रेशन एथिकल प्रैक्टिस, जिसको आप लोग बोल सकते हैं अलर्टनेस, अटेंशन, यू नो, बट अराउजल इज अ वेरी वास्ट टर्म. तो जिसमें अलर्टनेस कम हो जाता है जब लाइट कम हो जाती है, अलर्टनेस बढ़ जाता है जो आंखों के ऊपर लाइट आ जाती है. अलर्टनेस कम होता है, यू नो, जब जब मैं कुछ ब्लैंक फूड खा रहा हूँ. ओके, अलर्टनेस बढ़ जाती है अगर मैं बहुत स्पाइसी फूड खा रहा हूँ. ओके, सो sensory systems also works on my alertness. Okay, तो तो for example, अगर मैं नींद से उठता हूँ तो अगर कोई and actually calls me कि okay sir, your query handling session is there, will I be able to take that session? अभी I'm just in the bed, I'm just got up.
and somebody says, sir, आपका query handling session है. Will I be able to take that session? Can you please put it into the chat box? Will I be able to take the session? I like things to be more interactive so that you can understand better. I just got up and I have 18 years of experience, 19 years of experience, and somebody told me, sir, query handling it. Will I be able to start that lecture very fast? Can I start it? Put it in the chat box. No, not possible, right? Can you please tell me? But I am knowledgeable. I am skilled. I don't have any communication problem, expressive communication problem. I have a lot of experience in my things. Everything is there with me. Still, why I will not be able to do? Because my arousal is not gone to the level of functionality. Okay, so if my arousal is not gone to the functionality, that means I am in a low arousal. Okay, and in a low arousal, that means I am processing lot of information in a lowered manner. Okay, that means my registration is not happening at that level. Okay, neither my tactile registration, my proprioceptive registration, the movement have not. I'm just lying down. Okay, I didn't get adequate movement. Now मैं बेड से उठता हूँ, मैं नहाता हूँ, गर्म पानी, ठंडा पानी. I take brushing, I do brushing. Okay, I do exercise, I walk, I hear music. Okay, मैं चाय भी पीता हूँ, शायद कॉफी लेता हूँ. ओके, थोड़ा सा खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ. ये सारी चीजें मेरे सेंसर सिस्टम्स को अलर्टनेस की तरफ लेकर जा रही हैं. When I develop my arousal, so मैं शायद मॉर्निंग में 7 o'clock में उठा, लेकिन 8:30, 9 o'clock तक now I'm at a level of taking the session or taking a kind of a consultation or kind of a seminar or webinar. Okay, do you all agree with me? So me as a person is not important. Me, my arousal is more important so that I can interact with the world. Yes. Now that is registration. Okay. But suppose the second thing, अगर सेंसरी सिस्टम का जो दूसरा काम है जो वर्क ऑन अराउजल पर काम करने के वक्त अगर कुछ लाइट मेरे आंखों पर आ रही है या अगर कुछ बड़ा आवाज आ रहा है या अगर बाहर मेरे टुडे आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, सो बाहर ग्राउंड है बड़ा और यहाँ पर नाइट मैचेस भी चलते हैं. ओके, तो वहां से मैचेस का अगर आवाज आ रहा है एंड आई एम टेकिंग अ लेक्चर, so what my brain is supposed to do? I should lower down the intensity of those sound and increase the intensity of the sound coming from your questions or from in this interactive session. लेकिन ओके, वहां पर अगर वो साउंड को मैं अगर इनहिबिट नहीं कर पाया तो व्हाट विल हैपन इन माय ब्रेन? प्लीज पुट इन योर चैट बॉक्स. सपोज अगर वहां पर बच्चे खेल रहे हैं और बड़ी बड़ी माइक पर आवाज आ रही है, इट्स अ बिग ग्राउंड beside my house. So what will happen with me? I am taking a lecture, I am not able to lower that sound in my brain. What will happen with me? Please put it into the chat box. I will not be able to communicate. That is secondary. सबसे पहले क्या होगा? उसके पहले क्या होगा? What will happen before that? Okay, I will irritate. Yes, yes. मेरा concentration problem होगा, confusion होगा, मैं distract होते रहूंगा. Every time I'll get distracted. Yes, all these things are happening because I am not able to modulate that sound coming from far, which is coming onto my ear with high intensity, and I am not able to. Yes, I will agitated, frustrated, confusion. This is a modulation dysfunction. Okay, and when this will happen, will I be able to create my arousal properly, or my arousal will go beyond the limit? वो limit के ऊपर चला जाएगा. What will happen? My arousal will go up or my arousal will go low. What will happen? Up or low? Please put it in the chat box. Up. Yeah, beyond the limit. So अगर ये beyond the limit जा रहा है, that means there is one sensory system is not working. I am not able to modulate. I will not go in much detail, but because of that modulation is not happening. Okay, I will not be able to filter the information and I will not be able to create right attention. So problem will happen. The second problem will happen that
somebody is written in the start, I will not be able to communicate with the audience. तो अगर मुझे किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, मुझे किसी के साथ भी इंटरेक्ट करना है, तो सबसे मेरे दिमाग का समतोल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो एक तो मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, या अगर मैं लोगों में हूं तो मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाऊंगा। Now coming to the girl over here, or girl or a boy who is getting irritated because of some kind of a crunchy food or something like that, there are chances that this girl are having two problems. One can be tactile hypersensitivity, okay, and along with it, the modulation is so highly affected, can be a auditory hypersensitivity also, okay, and because of that, even though she might be happy to be with the people around, she वो आ गई है, वो बैठ गई है रेस्टोरेंट में, सब लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन शी इज नॉट एबल टू टॉलरेट द स्मॉल साउंड ऑफ अ क्रंची फूड, ओके, एंड देन शी गेट इरिटेटेड, एंड इरिटेट होने के बाद वो खुद को बाइट करने लगती है, बिकॉज बाइटिंग इज काइंड ऑफ अ डीप प्रेशर और काइंड ऑफ अ सेल्फ रेगुलेशन करने के लिए शी इज ट्राइंग टू सीक अ लॉट ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, ओके, बिकॉज प्रोप्रियोसेप्शन एक्ट्स एज अ बिग मॉड्यूलेटर, ओके। तो अगर मुझे बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, तो मैं आंखों के मसल्स को टाइट करूंगा। अगर मुझे तीखा हो रहा है, बहुत तीखा लग रहा है, तो मेरे टंग के मसल्स को मैं टाइट करूंगा। अगर बहुत आवाज आ रही है, तो मेरी बॉडी के बहुत सारे मसल्स, ओके, facial muscles will increase the contraction so that I can reduce the sound, and this is called the modulation. That means this girl is not modulating, and that is why she is getting irritated. And वो अगर बहुत बार इरिटेशन में रही, शायद बचपन से अगर वो इरिटेशन में रही है, तो शी पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, थेरेपिस्ट ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, तो भी उसका लर्निंग कंप्लीट नहीं हुआ होगा। और जहां जहां पर लर्निंग उसको चाहिए होगा, वहां वहां पर वो आवाजें कम करने की कोशिश करेगी। अगर जहां पर लर्निंग लोगों ने उसके साथ करने की कोशिश की होगी और वहां पर आवाजें बहुत ज्यादा है, तो वहां पर वो लोगों के साथ इरिटेबिलिटी डेवलप करेगी। अल्टीमेटली उसका सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा, ओके। सो वेरी बेसिक थिंग, मॉड्यूलेशन डिसफंक्शन, which if worked properly, I believe सबसे पहले अराउजल डेवलप होगा, उसके बाद डेवलप होगा इंटरैक्टिव एबिलिटी, उसके बाद होगा उसका गिव एंड टेक ऑफ थॉट्स एंड कम्युनिकेशन एंड यू नो with the people, and then she will be able to do much better in terms of social interaction and all those. So most of the time autism is not a problem, okay, लेकिन ऑटिज्म में देयर आर सर्टन सेंसरी रजिस्ट्रेशन इश्यूज, मॉड्यूलेशन इश्यूज, sensory motor dysfunction in the earlier development of the childhood, okay, there was some kind of an emotional insult happened in the early childhood, okay, or during the therapies, during the treatment, during the home program, parents is trying to bombard with a lot of information in the childhood, creates behavioral issues. Behavioral issues does not come with autism. They come with either with a lot of expectations or maybe some kind of a dysfunctions inside that many people, you and me also may have. Okay, but I don't tolerate if somebody is talking outside and I'm taking the consultation. I get up and I tell them कि okay, half an hour, please don't talk. Let me listen. लेकिन मेरा मॉड्यूलेशन थोड़ा सा लिमिट में है, okay, लेकिन अगर वो लिमिट के बाहर चला जाता है, तो autism child may get irritated, and then this kind of a problem must be happening. So छोटा सा भी अगर वर्ड या साउंड आता है, तो वो नोटिस करेगा, या तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा, कंफ्यूज होगा जो कर रहा है, इरिटेट होगा, एजिटेट होगा, एंड देन उस एजिटेशन को कम करने के लिए वो खुद को चू करे, खुद को बाइट करेगा, या चाहे खुद को पुश करेगा या थ्रो करेगा, सो दैट दिस इज समथिंग हैपनिंग। ऑटिज्म इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है right way of understanding that girls dysfunction. I hope this people would understand. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर भी चला जाता हूँ, but are you understanding what I said, everyone? Yeah, yes, and yes, right. Good. Can we move to the next question, sir? Yes. Yes, there's a child from Kerala, again 2.9 years, child with autism.
Child is always showing tantrums and stubborn behaviors. Uh, he can't take anything from floor, and if we are trying to tell him that you please do something or take few things from floor, he started screaming, and he is not interested to do any activities in OT sessions after 3 months of practice also. So that is the question. Can you repeat the question? Child is 2.9 years. Yes, Autism? 2.9 years autism. Okay. He's not able Tantrums, shows to, tantrums. Okay. yes, stubborn behaviors and tantrums. He's not able to do floor activities, I guess, because it's written that he's not able to do anything from floor and not take. If we tell him to take anything from the floor, he will not do it. He'll start screaming and not interested in doing any activities in OT sessions. Okay. Okay. Yeah. Yeah. So this child is very simple to handle because the previous girl is 11 years. बहुत सारा डेवलपमेंट में बहुत सारा उसमें उसने देखा है, बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 2.9 इयर्स अगर बच्चा है और अगर शायद अगर मैं मान के चलता हूँ कि वो बच्चा थेरेपिस्ट के लिए जा रहा है और फ्लोर टाइम शायद थेरेपी में वो नहीं बैठना चाहता है फ्लोर पर या नहीं जाना चाहता है किसी के पास. दिस इज टिपिकल साइन ऑफ आई शुड नॉट डायग्नोज ओवर हियर. ओके. बट ये बच्चा शायद किसी का टच नहीं लेना चाहता होगा. ओके. या किसी ने भी उसको ये खुद जाके टच करेगा. ओके. लेकिन वो किसी का टच को टॉलरेट नहीं कर पाएगा. दिस इज अगेन अ मॉड्यूलेशन डिसफंक्शन जिसमें चाइल्ड विल गेट इरिटेटेड इफ अनवांटेड टच या उसको नहीं पता और थेरेपिस्ट ने उठा लिया या कोई रिलेटिव ने उठा लिया तो ही माइट गेट मोर इरिटेटेड एंड ऑल. और मोस्ट ऑफ द टाइम इरिटेशन में होता है बच्चा. एंड देन थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, इंप्रूवमेंट आ जाता है. ओके. एवरी चाइल्ड विद द थेरेपी इंप्रूव्स, लेकिन वो इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है कि आप कौन से चीजों को टारगेट कर रहे हैं. ओके. There are two ways to understand this case. मैं दो अलग अलग तरह से केस कर रहा हूँ because I don't think so I have a lot of information over here about the child. तो दो तरीके से मैं देखना चाहूंगा. एक है चाइल्ड इज थेरेपिस्ट के साथ बच्चा थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है. ओके. इंप्रूव जब होता है तो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती है. एवरी चाइल्ड, आई हैव सीन दिस विद एवरी चाइल्ड. एंड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ थेरेपीज child becomes a bit stubborn, child becomes a bit demanding, child becomes a bit controlling others. एंड पेरेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है. आई मीन समझ तो पड़ रही है लेकिन जिद्दी हो गया है. उसको समझ तो आ रहा है, उसको वो कमांड भी फॉलो कर रहा है, आई कांटेक्ट कर रहा है, नाम को रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन जिद्दी हो रहा है, इरिटेट हो रहा है ना. हाँ, हर वक्त मेरे साथ अलग होता है, मम्मी के साथ अलग होता है, जब हम लोग एक साथ होते हैं तो हमारे साथ अलग होता है. तो मैं हर वक्त इसको बोलता हूँ कि दिस इज अ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट योर चाइल्ड इज शोइंग. नाउ व्हाई इट इज एन इम्प्रूवमेंट? इट इज बिकॉज the child who was not understanding anything from the environment or from his body has started understanding little bit. and कोई भी इंसान या कोई भी मैमल कि जब वो अंडरस्टैंडिंग करता है तो सबसे पहले वो डेवलप करता है कंपैरिजन एंड चॉइसेस. ओके. तो पहले पीला आया या नीला आया या लाल आया, उसके लिए सब कुछ एक था. ओके. पहले बड़ा चीज आया, छोटा चीज आया, उसके लिए सब कुछ सेम था बिकॉज सेंसरी मोटर स्टेज वाज नॉट डेवलप्ड. Now therapist has worked and now child has started developing the right kind of orientation. Now child is becoming comparing. I mean he's comparing to the environment. नहीं, मुझे लाल वाला ही बस चाहिए, मुझे वो येलो वाला बस नहीं चाहिए. मुझे लाल वाला खिलौना चाहिए, मुझे येलो खिलौना नहीं चाहिए. ओके. मुझे वो रिंग वाला ही टॉय चाहिए, मुझे वो बॉल नहीं चाहिए. ओके. एंड थेरेपिस्ट या पैरेंट बोलता है पहले तो ये खेलता था लेकिन अभी उसको क्या हो गया, उसको वही चाहिए. और अगर जाने अनजाने में अगर हम वो चीजें नहीं देते हैं बच्चे को, then what happens? The child becomes intolerant because he is not able to communicate. वो अपने एक्सप्रेशंस नहीं ये कर पाए, उसके लिए एक्सप्रेशन नहीं किया रोना. क्राइंग इज अ कम्युनिकेशन. मैं सारे पेरेंट्स को एक चीज बोलता हूँ, क्राइंग इज नॉट अ पेनफुल एक्ट ऑफ अ चाइल्ड, इट इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन. Irritability is a communication, aggression is a communication,
Biting is a communication, hand flapping is a communication. Okay, it is a mode of communication to express their needs, express their emotions, express their orientation, express their thoughts, express their ideas, express their reasoning about environment. Okay, तो बच्चा जिद्दी हो जाता है for in a therapy, in a developmental approach, it is a development, it is a good thing. अब बच्चा जिद्दी क्यों होता है? ओके, बहुत बार हमें लगता है कि बच्चा अरे ऑटिज्म है, अरे बेचारा है, अरे नहीं उसको नहीं समझ में आ रहा है, अरे थोड़ा सा रोने लगा तो उसको दे दो. वी स्टार्ट गिविंग थिंग्स. ओके, एंड चाइल्ड इज सीइंग कि मैं रोता हूं तो मुझे मिल जाता है, मैं रोता हूं तो मुझे मिल जाता है, एंड ही डेवलप्स अ वैलिड कम्युनिकेशन. पेरेंट यहाँ पर ये नहीं देखता है कि बहुत बार पेरेंट्स यहाँ पर नहीं देखता, शायद घर पे रिलेटिव्स यहाँ पर नहीं देखते कि क्या वो बच्चा सच में डिजर्व करता है. अगर वो डिजर्व करता है तो उसको मिलना चाहिए, अगर वो डिजर्व नहीं करता है तो उसको वो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए. अगर वो डिजर्व नहीं करता है और वो रोया, उसको मिल गया, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि जिद बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? प्लीज पुट इट इन चैट बॉक्स. बढ़ेगी. यस, अगर ये जिद बढ़ेगी तो उसके लिए अगेन autism is not responsible is our way of tackling the child. आपने क्योंकि see I can say this because I don't distinguish between autism and a normal child. For me every child is a child. Okay, but when उस ऑटिज्म को बहुत ज्यादा इमोशनली देखा जाता है. ओके, बहुत ज्यादा बेचारा, बहुत ज्यादा ये उसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं, ही इज अंडरस्टैंडिंग इन हिज ओन वे. ओके, बहुत बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग उसको सब कुछ दे देंगे. ओके, दैट इज अ ट्रैप वेयर चाइल्ड बिकम्स स्टबर्न, चाइल्ड बिकम्स जिद्दी. ओके, जो टिपिकल डेवलपिंग चाइल्ड के लिए पेरेंट थोड़ा सा डांटेगा, पेरेंट थोड़ा सा बोलेगा तो वो थोड़ा सा समझ जाएगा, लेकिन यहाँ पर he has developed a very rigid way of demands, और उस डिमांड्स को जब आप फुलफिल करते हो then they become more rigid. Okay, and that is a trap. और एक टाइम था बच्चा पेरेंट्स के घर में रह रहा था. ओके, लेकिन अभी क्या होता है, पेरेंट्स वो बच्चे के घर में रहना शुरू कर देते हैं. ओके, राइट, और वो बच्चा धीरे धीरे पेरेंट्स के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देता है. ओके, so that is how the autism becomes a problematic. It is not the autism is responsible. Responsible is a way we tackle with those demands or with those things. Okay, this is one thing. Second way of looking at this child is becoming child is not playing on a floor time. Child doesn't want to be with others. Child is showing tantrums and all. Very simplified, I told you in the beginning. It is a modulation dysfunction. And a therapist should look after in a proper assessment. What the lacking, why the modulation, which sensory system is acting extraordinarily. Okay, which sensory system is not getting modulated, not getting filtered. Understand it, work on it in a very subtle way. Go very slow, you will reach faster. मैं हर एक पेरेंट को एक बोलना चाहूंगा, जितना स्लोली जाओगे उतना फास्ट पहुंचेगे. I've seen Harshali's kids, and second one is really very difficult. Okay, was difficult. I want to share, sir. I mean, I can't even hold on for myself because उसका ऐसा था कि stubborn का दूसरा नाम ऋत्विक था. Like stubborn के लिए सिनोनिम नाम ऋत्विक था. Okay, but and I when at Nagpur we have a center, and she called me for dinner, and Ritvik was not he was sitting, and she was giving him mashed food, and I said no, don't give this. I mean, this is not necessary. He can chew, he can do it. And then he was making hangama and all, और वहां से मुझे I should share this. But Harshali's father was very angry on me कि why you are doing this with the child? Why you are so these things? आप डॉक्टर कौन से हो? क्या क्या नाम के डॉक्टर हो? You are making the child cry and you are these things. And I was in a world of war.
He's a he's a big personality. He's a big he was a high court judge. And उनसे मैं बहस कर रहा था was a मैंने सोचा कि देखो this is the way you have to deal with a child. And yeah, but eventually they also understand because एक टाइम होता है कि बच्चा हमारे घर में रहना चाहिए और वो हमारे घर में रहना चाहिए, लेकिन जिस दिन आप बच्चे के घर में रहना शुरू कर देते हो उस दिन ऑटिज्म बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. यस या यस. I want to say something like parents point of view. मतलब मुझे लगता था कि उसको लाइक अभी मैं ये टर्मिनोलॉजी तब समझती नहीं थी कि उसको चूइंग का प्रॉब्लम है, उसको ओरोमोटर इशू है, तो वो च्यू नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको स्मैश फूड ही खिलाऊंगी. एंड इतना ज्यादा प्रॉब्लम था वो स्मैश फूड, बिकॉज कहीं जाना है तो आई यूज्ड टू कैरी माय मिक्सर विथ मी. सो इट वाज लाइक लाइफ पूरा हेल हो जाता है उसमें. आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट होता है. बट वो क्यों? क्योंकि वो स्मैश फूड खाता है और बाकी कुछ नहीं खाता है. बिकॉज अगर दिया मैंने होल फूड तो यूज टू थ्रो इट आउट, मतलब फिर वो उल्टी साफ करो, ये करो, वो करो होता था, इसलिए मैं उसको देती थी कि नहीं वो नहीं खा पाता. बट जब एक बार मतलब लिटरली उसको जबरदस्ती खिलाया बैठ के, उसने निकाला एक दो बार और फिर उसको पता चला कि मैं नहीं देने वाली हूँ स्मैश फूड. सो देन ही एक्सेप्टेड दैट. So stubborn. I mean, we just discussed one thing. There was, I can say, 50 other things that we have. मतलब वो ब्रेक किया वहाँ पे वो बिहेवियर को, एंड ब्रेक करते 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 नाउ वेबिनार इज हैपनिंग एंड he just took his food on his own and उसका खत्म हो गया खाना and he is gone for his studies अपने आप से. So that's my achievement, big achievement. Yeah, exactly. So जैसे आप guys, thank you for sharing this because I know him since childhood and now he's 11, but he's a very charming and very interactive and very nice communicating person. Now he has overcome the autism. Okay, I will say because autism is a social interaction and social communication disorder. It is not at all a behavioral disorder. Behavior is a transaction issue between parent and a child, society and a child, therapist and a child. We need to understand how we have to transact with the child. Okay. So, yes, so it is kind of a modulation dysfunction. The child is not modulating the information. Like तक को वो अगर मुंह में अगर modulate नहीं करता था तो वो overactive gag create करता था और वो बाहर निकलता था. ओके, इसका मतलब दो चीजें हैं, एक तो अडॉप्ट करो उसके प्रॉब्लम को या उसके प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गिवन चैलेंजेस. दैट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म. ओके, पहला है अगर अडॉप्ट करेंगे तो फिर वो बच्चा आप बच्चे के घर पे रहोगे, लेकिन अगर आप उसको चैलेंजेस क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली इट्स ए ह्यूमन नेचर, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन कॉग्निशन, एवरीथिंग इज ह्यूमन. ओके, राइट? देन व्हाई वी हैव टू बिकम ऑटिज्म? ओके, autism is a state of development. It is not a full lifetime thing. Let me tell you this. It is something, if you work it properly, the child will come out of it and will behave very much appropriately with his cognitive abilities. So अगर इस चीज में अगर आपको ध्यान में रखना है तो सिर्फ एक चीज, दो चीजें ध्यान में रखिए. अगर बच्चा जिद्दी है तो जिद्दी है, इसका मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप हो रही है. ओके, लेकिन वो उसका दिमाग अभी अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसकी चॉइसेस डेवलप हो रहे हैं. दूसरा, अगर आप उस डिमांड्स को फुलफिल करते रहेंगे, या बच्चा मेरे घर में रह रहा है मेरे हिसाब से, या मैं बच्चे के घर में रह रही हूँ उसके हिसाब से, Harshali associate, she has to do everything with respect to his way of behaviors and all, then the life becomes very difficult. And for that, I believe we have to think in both ways. One, looking at dysfunction, and second, very strongly, headstrongly, the therapist को follow करना होता है. That is, I know what it is because I have gone through this a lot many things. आपको क्या पता हम कौन से दो हम क्या सहन कर रहे हैं? नो, मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे पता है कि नॉर्मली कैसे जाना है. ओके, मुझे नहीं पता ऑटिज्म में कैसे रहना है, इसलिए मुझे ये पता है कि नॉर्मली कैसे आगे जाना है. ओके, बिकॉज आई डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटिज्म चाइल्ड एंड अ नॉर्मल चाइल्ड. ऑटिज्म चाइल्ड 7 साल का है. ओके, लेकिन मैं उसको देखूंगा कि वो सोशली कौन से लेवल पे है. शायद 3.5 साल का है, शायद 2.5 साल का है.
I will take him as a normal 2.5 year old child and I will behave, transact, interact, communicate, play like a 2.5 year old child, give him challenges like a 2.5 year old child, and tackle his behavior like a 7 year old child. Okay? Because the real love is not caring the child. The real love is all about I will give you adequate challenges so that you tomorrow you can stand alone without me also. Okay? वो challenges आप जितना जल्दी दोगे उतना अच्छा है. You know? So बहुत बार I mean I'm just extending it, but मैं parents को एक सवाल पूछता हूँ कि who's experienced you or a child? ओके घर किसका है आपका या बच्चे का यू नो सही और गलत का ये किसको पता है आपको या बच्चे को राइट ईएमआई घर का कौन भर रहा है या आप या वो बच्चा राइट सो कल्चर किसको पता है संस्कार किसको है आपको या बच्चे को अगर वो सब चीजें पेरेंट को है देन चाइल्ड शुड मस्ट फॉलो द पेरेंट कल्चर I again repeat culture of the family. I'm not saying expectation of the parent. Expectations गलत हो सकते हैं ओके कि वो रेडी नहीं है लिखने के लिए लेकिन हम उसे वो करवा रहे हैं वो रेडी नहीं है शायद बोलने के लिए हम उसे बुलवा रहे हैं ओके सो एक्सपेक्टेशन से नहीं लेकिन कल्चर डेफिनेटली द चाइल्ड हैज टू फॉलो दिस थिंग्स चप्पल वहीं पर रखनी है खाने के लिए ऐसे ही बैठना है बहुत सारी चीजें हो सकती है वो कल्चर आपका 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 जो भी हो लेकिन he has to follow you and for that you have to follow your culture very passionately child will become a part of your family okay if not if you're following his behavior the whole family will become the part of his autism culture you have to decide what you want you have to decide what which where you want to be okay um, that's it thank you Yes, actually, that's what again another question was there in chat box. Say they can't control stubborn behavior. I hope you got your answer. कितना भी stubborn behavior हो, I mean that we can break through just to treat them as a normal child. Okay, then we'll move to the next question quickly. So yes, yeah. Yes, go ahead. It's a somehow related questions, but still I'll read it out. 2.8 years autism from Navi Mumbai. We have understood all the symptoms of autism. However, please guide us on how to treat or manage them and how to improve speech development. Also, the child does not have proper attention and does not follow instruction. Please advise us on what steps we should take. आई थिंक इस सवाल के जवाब मैंने हर एक सवाल में दिए हैं आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग चाइल्ड इज दिस थिंग तो मैं पेरेंट्स को एक चीज बोलना चाहूंगा आई मीन इसका जवाब मैंने थोड़ी देर पहले भी दिया है कि 2.8 years autism and we know everything about autism I don't think so that you should know everything about autism you just should know two things about autism my child is not interacting my child is not communicating remaining all things is all technical and all and more you become technical you lose the essence of being parent okay मैं फिर से कहूंगा अगर मैं अपने बच्चों के साथ आई मीन आई रिमेंबर आता वो माय एल्डर सन वाज हैविंग अ dyspraxia okay in early childhood okay getting down steps climbing speech was delayed and all and जब मैं मुझे सब कुछ दिख रहा था but when I started working with him no and I started giving him challenges and I started giving he used to look at me that why you are doing this with me I mean you are acting very plastic you are acting from some kind of things which you are not okay this is something very important parents and then we are our therapist and then I discussed with my therapist okay he is not accepting me as a therapist why don't you work and I would like to guide you therapist was very much new but I guided him therapist के साथ वो काफी अच्छे से कर रहा था because see as a parent no we have a very different bond with the child we have a very different care with the child over there we should not take the child technically we cannot I cannot okay I will take my child emotionally okay maybe therapist will take the child more technically more rationally more individually okay because they are not looking at the emotion they are looking at the dysfunction okay
And as a parent, I don't want to see the dysfunction in my child. My child is best. My child, I love my child. He's my creation. He's going to be the best. Okay. वही इमोशन हमें होना चाहिए कि आई नो दैट माय चाइल्ड विल बी द बेस्ट, यू नो, वो इमोशन होना चाहिए, लेकिन उसमें फियर नहीं होना चाहिए कि यू नो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद माय चाइल्ड. दैट मींस आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ दैट दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन विद माय चाइल्ड. ठीक. ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है. मैं बहुत बार समझाने की कोशिश करता हूँ और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक से नहीं समझाया. जैसे बच्चा पढ़ने के लिए जैसे हम लोग टीचर के पास भेजते हैं और टीचर बहुत रैशनली लेता है और हम लोग बहुत सो कल्चर कैन बी टॉट बाय पेरेंट्स, कट द स्टोरी शॉर्ट, एंड एंड सोशल एस्पेक्ट्स एंड अगर कुछ डिसफंक्शन है, अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो अगर मुझे कितना भी पता है कि इंजेक्शन ऐसे देते हैं, तो लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को इंजेक्शन नहीं देंगे. वो शायद कोई डॉक्टर ही देगा, शायद मैं डॉक्टर हूँ फिर भी, या कोई मेडिकल लीगल वेरी हाई पर्सन है, फिर भी वो अपने असिस्टेंट को बोलेगा नो यू गिव इंजेक्शन. दैट इज ethical practice. I always believe in terms of relations. So I know autism is a very alarming thing. No, I don't know autism. Okay, I know my child. I know my child is very loving. जब मैं आता हूँ तो वो खेलना चाहता है. जब मैं आता हूँ तब वो बहुत सारी चीजें खुश होता है या शायद वो खुश नहीं होता है. मैं बहुत उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ उसके साथ खेलने की. वो उसको पानी में खेलना बहुत पसंद है. उसको उसको वो जब खुश होता है तो ऐसे क्लैपिंग करता है. Now this is parenting. Okay, because there the parent is thinking in an emotional manner with the child. Okay, but 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 if I say कि अरे ये तो tactile defensiveness है, अरे ये तो proprioceptive under registration है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो autism, अरे ये तो ऐसा, then I am looking at a diagnosis and not looking at my child. No, let the therapist look at the diagnosis. There is only one diagnosis, in terms of your child. That is love, happiness, and joyful interaction. Okay, and how I can create it. The diagnosis only, it is not there, and treatment is how I can create the best with my child. Because treatment is how I can transact, how I can interact with my child with love, happiness, joyful moments. जितने ज्यादा मैं क्रिएट करूंगा उसके लेवल से, वो शायद 2 साल 8 महीने का है, लेकिन शायद 1 साल, शायद ना 10 महीने के टिपिकल बेबी के लिए ये कर रहा है. 10 महीने के टिपिकल बेबी के साथ मैं कैसे खेलूंगा, ताकि वो जॉयफुल मोमेंट में उसके साथ कैसे रिक्रिएट करते रहूंगा. रिक्रिएट अगेन क्रिएट. आई विल रिक्रिएट. सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, संडे हो गया. आई एम रिक्रिएटिंग इट एंड नाउ ही इज रजिस्टरिंग मी एज अ ह्यूमन who creates a joyful moments in his life. That is social interaction. That is a social interaction. Okay, इसीलिए मैं बहुत बार पेरेंट्स को बोलता हूँ कि योर जॉब इज वेरी मच डिफरेंट एंड थेरेपिस्ट जॉब इज वेरी मच डिफरेंट. होम प्रोग्राम है, राइट है. होम प्रोग्राम इज ओनली 1 hour in a day, but remaining 23 hours is lots of enjoyment with your child. I know मैं कितना भी बोलूंगा, but still it is not I cannot convince. Okay, but those whom I could convince, they are out of autism. Those parents, and Harshal is one of the example. Okay, those whom I could convince, those who understood me, the parenting has no age. आप ये नहीं बोल सकते कि my child is 11 years and autism. Okay, my child is child. आप उसमें टाइम नहीं डाल सकते. केस प्रेजेंटेशन के लिए ठीक है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी मदर के लिए अपना बच्चा, कोई भी फादर के लिए अपना बच्चा, वो 35 साल का हो, 3.5 साल का हो, 2 साल का हो, 6 साल का हो, पेरेंटिंग के लिए कोई एज नहीं होता. मैं हर वक्त ये सोचता हूँ और हर वक्त इससे कन्विंस्ड ही होता हूँ कि पेरेंटिंग के लिए कोई एज नहीं है. ऑटिज्म के लिए एज है, ऑटिज्म के लिए एज है, एडीएचडी के लिए एज है, बहुत सारी पढ़ाई के लिए एज है, लेकिन इंटरेक्शन के लिए कोई एज नहीं है. बिलीव मी, अगर आप उस बच्चे को उसके सोशल एज के आधार पर जब आप उसको कॉल करते हो, देयर इज नो नेम कॉलिंग इन दिस वर्ल्ड.
he has started responding to his name is कोई भी अपने नाम को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है कोई भी रिस्पॉन्ड करता है पीछे से आया हुआ इंसान या सामने से या कॉर्नर से आया हुआ इंसान ने कौन से इमोशंस आपके पास भेजे हैं it's very important मैं क्वेश्चन से भटक नहीं रहा हूँ okay I know autism I really don't know autism 18 19 years and maybe 20 years I don't know autism okay but I know how to connect with a child in that autism that is more important okay so अगर कोई मुझे बोलता है hey सुमित okay it is not and I look at that person I didn't look at the person because somebody called me I may look at the person but I will connect with that person if I understand his what kind of emotions he has thrown at me he's angry on me and I am looking at with some actual मुझसे कुछ गलती हो गई क्या sorry I don't know where I'm standing शायद कुछ गलती हो गई क्या that is a reciprocation okay अगर कोई मुझे बोले सुमित I mean I think somebody is calling me who's very near and dear to me okay मे भी शायद उसका टोन मैं बाद में देखूं लेकिन वो जो रिदम है वो शायद मैं उससे कनेक्ट हो जाऊं ओके सो पेरेंट्स बहुत बार टेक्निकली लेते हैं उसको नेम रिस्पॉन्सिबल अभी लेट्स टेक चाइल्ड नेम इज अभिमन्यु 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 एंड द चाइल्ड इज लुकिंग हाँ है ओके नेम रिस्पॉन्स है आ गया ओके फिर से दूसरी बार अभिमन्यु अभिमन्यु ओके अभिमन्यु देख रहा है अभिमन्यु कितने बार देखेगा आपको इफ यू आर नॉट सेंडिंग एन इमोशन टू द चाइल्ड if you are just judgmental every time you are judgmental whether he's looking at you or not child will definitely reduce the eye contact child will definitely reduce the name response that is called the regulation okay so coming to this point over here um, how I can improve the speech development of this child connect with the child you are very early and be a part of people who got normal 12 to 15-year-old child उनसे दोस्ती करो आपको ये समझ में आएगा कि हाउ नेचुरली पेरेंट इज इंटरेक्टिंग विद चाइल्ड वो नेचर वो नेचुरलिटी वो नेचुरल एबिलिटीज हम लोग मिस कर देते हैं जब हम ऑटिज्म के बारे में ज्यादा सोचते हैं so how to develop the speech in this particular child don't want to work on the speech you have a lot of time बहुत ज्यादा टाइम है स्पीच के लिए नहीं lot of interaction let's create that ontogenetic developmental pattern first interaction then communication then language time आएगा definitely speech भी develop होगा with little tuning in the dysfunction maybe dyspraxia हो तो by the therapist but I am just working on a speech by working on autism and I'm not giving the importance of these joyful connections and moments autism is going to be lifetime I think that's it so 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 I after 20 years almost 19 20 years in this profession including lockdown I have come across I believe that dealing with one child I may deal with one child but helping parents how to deal with a child I can treat thousands of kids so I would love to express my real feelings about what exactly goes in my mind when I'm dealing with a child okay many questions I will come are coming we got many questions I think Acharya got but we will give your answer we have a team you can connect with us anytime maybe 10-15 minutes you can have a conversation with the consultants at CRC they are with me they are with us 8 years 10 years everything they know what I know everything they well experienced professionals you have any queries you can connect with us I think that is the best way we can create ethical practice and we can help the child to come out of autism as soon as possible autism state as soon as possible thank you and thank you Achari
Yes, actually, we have so many questions, and I was about to announce that you please connect to them personally if you want to. CRC's consultants are amazing. They can answer your questions in a better way because we could take so many questions here live. So you can connect to them because our time is already up and. So can we take the last one? I mean, on the similar lines, it just with that whatever we discussed, it's on the similar line, like 2.7 years child. It's from Ahmedabad. And how can we improve social skills, motor skills, communication skills at our home? So you have told already, but specific at our home, that's what. I believe there is a when we deal with a child at a therapy center, you know, it's a very different way of bonding, very different technical aspect of way of dealing with the child. But if we do online sessions with the child, online sessions with the parent, the environment changes. थेरेपी सेंटर में हमारा एनवायरनमेंट होता है यू नो हम जो चाहते हैं वो बच्चे के साथ करवा सकते हैं लेकिन जब घर पे हम लोग थेरेपीज करते हैं घर पे जब ये होता है तो वो बच्चे का खुद का एनवायरनमेंट होता है and then we have to recreate that environment, okay, with challenges, various opportunities, where to work on the dysfunction that a child is going through, which is affecting his sociability and communication and his ability of learning. You know, that we need to create and recreate the environment. Learning always happens when you are forced into challenges, not into activities. I repeat, learning always happens when you are forced into challenges, not into activities. Activity word, sensory activity word is a curse to the autism community. It is a curse. You know, sensory activities. Nowadays everybody is trying to do the sensory activities. After 18 years in this profession, working every day to 8 to 10 hours every day, I'm still learning sensory integration, guys. You know, I still can't do it in 5 to 10 minutes. I will tell them and I would like to know more about the child. You know, be it sensory integration, be it neurodevelopmental techniques, be it any number of things which approaches which are acting as a novel approaches to bring child out of the autism. You know, defined approaches. Okay, I still can't say that I know sensory integration, but there are many people are sensory activities, attention develop करने के लिए sensory activities, concentration develop करने के लिए sensory activities, writing develop करने के लिए sensory activities, speech develop करने के लिए sensory activities. And that is a malpractice happening, and that's why autism is increasing nowadays. I remember when child used to come in a used to come to us in an early intervention phase. Out of 100 kids, I remember 80 kids were completely out of it within 1 or 2 years, and used to get discharged. But nowadays, I'm seeing the child, even though in an early intervention, because the parent has a lot of information and bombardment of information, ये करना है, वो करना है, वो करना है, you know, child is developing, very nicely developing. Okay, and good, all the goals are achieved, reviews are happening very nicely, and parents think कि हाँ मैं कुछ और try करूँ, मैं कुछ और try करता हूँ ताकि और fast मिले, you know, and then you lose the essence of that developmental things, and parent comes to me after 6 months कि हाँ हमने थोड़ा सा try करने के लिए गए थे और देखो ना ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा irritable हो गया, something like that, and I don't know what to do with that parent. I don't know. It's तो अभी खुद को लगता है कि शायद मैंने कुछ गलती किया था, उसको उसको कन्विंस नहीं कर पाया कि you don't have to do anything extra, your child is doing good, you know. Sometimes 3 महीने यहाँ पर, 3 महीने वहां पर, 3 महीने वहां पर, 3 महीने वहां पर, you know, that is not treatment. You have to be at one place and ask the right question to the therapist, to the professional, how I can do, what I should do at home. Okay, because at home I want to deal with the child. Let us understand this child in depth. How this child, what is the child's state of mind at this moment? What is the child's
stage of the development in this moment, what are the dysfunction is going through, वो कौन से अलग अलग बिहेवियर दिखाता है, उसका प्ले मॉडल क्या है, वो कौन सा पैरेंट का ट्रांजैक्शन एबिलिटी क्या है, आर पेरेंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम कंट्रोलिंग, आर पेरेंट ऑपरेटिंग फ्रॉम नर्चरिंग, आर पेरेंट ऑपरेटिंग फ्रॉम रैशनल. So there are n number of ways we need to understand, especially if we are doing with the home therapies. Okay, we have a specialized brand for that called as OTS, online therapy services. I think Anaka is there in this lecture. So she you can connect with her and you can understand how we will definitely make you understand how to do more effectively uh, 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 by not sending out or by dealing at home only, how we can treat autism at home. I believe CRC is the one of the biggest organization who's dealing with online therapy sessions in India, which is actually treating outside country NRIs and all. More than 200 cases are getting treated at CRC at this moment. Joe, without we are not connected, we are not seen the child physically. The child is not seen, but still the child is doing far better than even those who are doing on trial and error basis. Okay, so yes, you can connect with us. We can definitely guide you with this with the home based therapies. So I think that's it. I think thank you, Ashwin. I'm always, in any lecture, I'm not a good communicator. I'm not a good. मैं बहुत बार ऐसे हो गया कि स्टेज में गया या कुछ लेक्चर मुझे I get anxious every time. I get anxious to begin the lecture. By the end of the lecture, I always feel confident. You know. So yes, I'm enjoying. I thoroughly enjoyed these questions, and we would like to continue saying thank you for calling me, thank you for having us on the platform, wonderful platform Empower. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. But again, I would like to announce the number because I have so many questions are pending and I'm getting so many questions. So I don't feel good कि उसको मैं हम answer और cater नहीं कर पा रहे. But you can definitely connect on this number. Please note down this number. I will announce it. 900 44 60 650. I'll go again. 900 44 60 650. So on this you can connect and share your questions and you will get the answer for that. Surely you will get those answers. Right. Thank you so much, Sumit sir, and thank you so much, Team CRC, for doing this for our snake and our parents. And I hope you got many answers, parents. So thank you so much for joining and keeping faith on snake for this doing this. Okay. Good night, and see you next Friday with some interesting and knowledgeable topic or maybe question answer session. Let's see. Thank you so much. Good night.